कर्नल भट्टाचार्य सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू। और ये एक्चुअली एक मिलिट्री डिस्कशन तो है नहीं, आपकी रूट्स वेस्ट बंगाल में हैं और आप बड़े क्लोजली एसोसिएटेड रहे हो कैलकाटा से और वेस्ट बंगाल की सोसाइटी से। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बैकग्राउंड के साथ जो नॉलेज आपको है, जो बैकअप है आपके पास, मुझे ऐसा लगता है और काफ़ी लोगों को लगता है कि वेस्ट बंगाल बाकी इंडिया से डिफरेंट क्यों है। मीन्स आप कभी भी वेस्ट बंगाल का एक पॉलिटिकल, सोशल, इमोशनल कंडक्ट आप देखें तो वो डिफरेंट ही लगेगा। अगर इंडिया एक तरफ जा रहा है तो वेस्ट बंगाल थोड़ा सा पक्का है कि वो दूसरी तरफ जाएगा या फिर डेविएट करेगा। आप लीडरशिप की बात कर लो, सोशल कंडक्ट की बात कर लो, तो ऐसा क्या है वहाँ के सोशल मिलियो में या पॉलिटिकल मिलियो में कि वेस्ट बंगाल बाकी स्टेट से या सेंटर से या बाकी कंट्री से डिफरेंट रहना चाहता है? Good evening, Colonel Virendra. सर Actually, West Bengal emotional तो है ही, but there is a unique thing in West Bengal which cannot be shared with any other states of India. Reason, West Bengal, the name itself was given 4 years after independence. 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन जब बने तब आहिस्ते आहिस्ते स्टेट को इकट्ठा कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान वेस्ट बंगाल ड्यू टू लैंग्वेज एफिनिटी अगेन हैड ए पॉलिटिकल रेमिफिकेशन पोस्ट 1971। देखो, फ्रीडम स्ट्रगल जो लेट 30s में शुरुआत हुए थे, उस टाइम में भी इंडिविजुअल सैक्रिफाइस बहुत बंगाल ने किया। नोटेड लाइक ऑफ कोर्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, मातंगिनी हाजरा, वीरांगना। So it was in the mind and soul of every Bengalis to have freedom. इसीलिए पोस्ट 1971 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया with a very porous international border, क्या हुआ? They cling on to the memories of language. बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है और इंडिया का जो नेशनल एंथम है, both came out of the pens of the great Nobel laureate रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो पोस्ट 1971 माइग्रेशन हुआ था और इंटरनेशनल बॉर्डर एब्सोल्युटली पोरस होने से अभी भी वो माइग्रेशन कंटिन्यूज। एंड एज फार एज द वायलेंस ऑफ द प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, तो उसका पीछे तो और भी कारण है। इंडिया जब कांग्रेस का अंडर में थे, दैट वाज INTUC, द ओनली कांग्रेस पोस्ट इंडिपेंडेंस। लेकिन 60s में ड्यू टू लैंड ग्रैब मूवमेंट बंगाल ने क्या किया, वहां से नक्सलाइट्स पैदा हुए। नक्सलाइट्स वर फाइटिंग अगेंस्ट द ओल्ड जमींदार ऑब्लिक किंग प्रथा। Slowly and slowly this Naxalite movement became violent with the brilliant college students of presidency, and it migrated towards Bihar, etc. उसके बाद जब कम्युनिज्म 60s में फार्म रूट ले लिया था, if we recall, we had to imply president's rule, not once, but at least 3 or 4 times in West Bengal region to bring down this violence. Same thing continues across the country. Every political party, due to their own benefit, divide and rule. अब उसको कम्युनल ना बोल के, एक तो है कम्युनल तो है ही। क्यों कम्युनल? क्योंकि 50s में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिया गया था, उस टाइम में लाइक सिख, जैन, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियन
Muslim was taken as a minority community. लेकिन ये बंगाल में कभी नहीं था. Recall even during Britishers, मिर्जाफर वहीं से निकले थे, बंगाल से. लेकिन लैंग्वेज एफिनिटी हमारे हिंदुस्तान का कोने कोने में अभी भी काट रहा है. हिंदी वर्सेस नॉर्थ वर्सेस साउथ, ईस्ट वर्सेस दिस, तमिल वर्सेस तेलुगु वर्सेस सो मेनी. लैंग्वेज एफिनिटी अभी भी बंगाल एंड बांग्लादेश को एक करते हैं, और इसीलिए कॉमन कॉमर्स एंड ट्रेड इज इन फुल फ्लोरिश. In the hospitality sector, Calcutta is full of Bangladeshi. Even in the culture, movies, songs, and others, everything is going on. So both the countries, one side Bangladesh and West Bengal of India, people are very happy. Yes, it took a turn so strongly that when after Jyoti Bose, Buddhadev Bhattacharjee came into the power and he lost the power, we see again Congress coming up. And in late 90s, or I will say early 2000 year, a new party joins, like small regional party, by the name of Trinamool Congress. Trinamool, in Bengali, it means grassroots Congress. They started working, and in the late or early 2000s, they had one or two MLCs. During that time, the present Chief Minister, Mamata Banerjee, as a nominated MP, came to the central government under Congress rules. And he rose up to become a union cabinet, that is railway minister. She worked with Congress government for a long time. And then when BJP came into the central government, during Atal Bihari Vajpayee, due to a minor role in the ministry, she started going back to her roots, that is in Bengal. Trinamool Congress came to the power, I must confess, in the year 2008. But in 2008, they had a fewer number of MLCs. But in the year 2011, TMC obtained absolute majority, more than 2/3, and Mamata Banerjee became the founder member and the chairman of TMC and came to the power, being the chief minister. And that is the time when policy and everything was made distinctly separate from the central government, that is Indian state. So this political violence prevailing now is not a new phenomenon. Like in the Uttar Pradesh, we have seen political violence like Kheri violence. Same thing has happened in Andhra Pradesh where the election is coming up. Same thing happened in Madhya Pradesh. So this instability between two communities is always there. We can say Hindu versus Muslim or scheduled caste versus upper caste. So many things are there. More the number of states, more political violence. I think I could throw little light on the subject. हाँ सर, आपने क्लैरिफाई किया है. मीन्स एक तरीके से देखो, ये तो क्लियर है कि जब सेंटर में दूसरी पार्टी पावर में होती है और जब स्टेट में दूसरी पार्टी पावर में होती है तो ऑब्वियसली अलाइनमेंट में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम्स आती हैं. मगर जो जनरली देखते हैं आज, इवन टुडे इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, इफ वी टॉक, वेस्ट बंगाल में जो वायलेंस का लेवल है, पोस्ट इलेक्टोरल वायलेंस, बिफोर दैट, वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ गया. अब इसमें कम्युनल फैक्टर है कि पॉलिटिकल फैक्टर है, और या फिर सोसाइटी में वायलेंस की एज ए टूल एक्सेप्टेंस बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा है क्या? अब जैसे यूपी में इलेक्शन हुए, यूपी में इलेक्शन में कोई वायलेंस इस बार नहीं हुई, पोस्ट इलेक्शन भी कोई वायलेंस नहीं हुई. वेस्ट बंगाल में देखो आप, पिछला जब इलेक्शन हुआ
तो बहुत वायलेंस हुई, और सबसे ज्यादा वायलेंस तब हुई जब इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके टीएमसी के फेवर में। तो या तो फिर स्टेट उसको प्रमोट कर रहा है, या फिर ममता दीदी प्रमोट कर रही है, या फिर इसका एक कम्युनल एंगल है, बिकॉज उस पॉलिटिकल वायलेंस के जो सफरर थे, इन मोर ऑफन देन नॉट वो हिंदूज थे वहां पे वेस्ट बंगाल में। एम आई राइट सर? यू आर राइट। लेकिन ये अभी तो पोस्ट 2000 का फेनोमेना। फिर आपको याद रहना चाहिए 1970s में अननोन हेलीकॉप्टर से जब आर्म्स ड्रॉप हुआ था, वो भी बंगाल में हुआ था। तो और पोस्ट ड्यूरिंग 71 to 72 ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रोल, घर घर से सिद्धार्थ शंकर राय व्हेन ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, a movement making of bombs, firearms and everything was taken up, finished up. Lekin that knowledge of making bombs and hurling bombs to each other, including Molotov cocktail, remains in every house of Bengal. Recent political violence. Yes, this is a phenomena when though Hindu majority state, we call them majority. Why? We have not done caste basis census for a very long time. In Bengal, the typical problem is whether you are having a land and power or you don't, you are a landless power. Landless power is nil. So even as on today, you will see the maids, जिसको बाई कहते हैं महाराष्ट्र में, they are coming without ticket from a very long distance, but and working in Kolkata and going back. Many of them, they do stay in Bengal or Calcutta, being the only metro city even as on today. लेकिन जिस दिन पोल होगा, 3 दिन का लिए छुट्टी लेके वो 150 किलोमीटर दूर में घर में जाते हैं. Even many people of West Bengal पोल के टाइम पर पुणे से भाग के जाता है वहां पर. क्यों? कहते हैं हमारा थोड़ा सा एक कच्चा जमीन है, अगर जाके उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देंगे तो जमीन दखल हो जाएंगे. ये वही वेस्ट बंगाल है जिसको सराहना किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड होल वर्ल्ड में फॉर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग मार्जिनल फाउंडर. तो एक्चुअली इट इज अ फियर साइकोसिस. आज का दिन अगर एक मोहल्ले में both on a main street, suppose on the left side there are many multiplexes, on the right side there are multiplexes. अगर लोकल गवर्नमेंट टीएमसी गवर्नमेंट कहते हैं, म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं आप टीएमसी का कलर करा दो तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेंगे, या तो हम कंप्लीट पेंटिंग करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑपोजिट साइड वाले, रास्ते का दूसरे साइड वाले, अगर वो नहीं कराते, बोले ठीक है आप अपना पेंटिंग करा दो, लेकिन अपना पेंटिंग आप कर ही नहीं सकते हो. क्यों? जो पेंट करेगा वो भी वहीं का बासिंदा है. तो उनसे पूछ के वो बंदा को लो, उनसे पूछ के वो ही कलर करो. अरे बाबा कौन इतना झकझक करे? फियर साइकोसिस में हर जनता, हर पब्लिक, दे बोर्ड डाउन टू द प्रेजेंट सिस्टम. आई विल नॉट से पॉलिटिकल, बट द प्रेजेंट सिस्टम. उसको उसूली कह लो, हफ्ता कह लो, कुछ भी कह लो. It is the fear which is in the mind of each and everybody of West Bengal. अभी वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में ये क्यों नहीं मारपीट होता भाई? क्योंकि वहां पर अनदर कम्युनिटी ऑफ पहाड़ी पीपल्स, वी कॉल देम, वहां तो नहीं होता है, लेकिन वहां से नीचे आते सिलीगुड़ी में फिर वही शुरुआत. तो टिपिकल फियर सिंड्रोम. तो आपका मतलब ये है जो पोलराइजेशन है अक्रॉस द पार्टी लाइंस, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ कम्युनल लाइंस फॉर द टाइम बीइंग, अक्रॉस द पार्टी लाइंस जो पोलराइजेशन है, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, वो सोशल पोलराइजेशन की तरफ इंडिकेट करता है. एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन वो दिन ब दिन सो कॉल्ड वन कम्युनिटी का तरफ जा रहे हैं. लास्ट इलेक्शन जो हुआ था उसके बाद देखा गया, इवन म्यूनिसिपैलिटी का प्रीवियस जो कमिश्नर थे, he becomes a very powerful minister. ऐसे नंबर ऑफ मिनिस्टर्स now
if we see, yes, Hindu majority is still there. Lekin many of those Hindu majority ministers are either again on the family system, Mama Chacha Tau, और दे आर दल पलटू बीजेपी से जाके बाबुल सुप्रियो एमपी होने के बावजूद जब उनको बताया गया आप जाके लोकल मिनिस्टर बन जाओ, हार गया और 6 महीने के अंदर जाके फिर वही टीएमसी होके अगेन इलेक्शन में जीत के आ जाता है. इट इज पावर ग्रैबिंग. तो ये तो चलता ही रहेगा. और ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन, अर्थनीति मैं कहता हूं अगेन फाइनेंस, that state is quite stable even as on today. That's why they can export electricity from West Bengal to the neighboring state. They sell it. And of course, they have got water also, which they refuse to give it to Bangladesh. Okay. That's a very typical, which you cannot compare with any other communities or any other states of the country. ओके. तो आपका मतलब है कि जो ममता बनर्जी इतनी सक्सेसफुल है वहाँ पर पॉलिटिकली, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहाँ की जो सोशल डायनेमिक्स है और जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है उसको उसने इकोनॉमिक अर्थमेटिक में भी कन्वर्ट करके और एक तरीके से सोसाइटी को अपने स्पेशली मेजर पार्ट उसको अपने पीछे कर लिया. इज दैट द रीजन? एब्सोल्युटली करेक्ट. In West Bengal, he knows how to play politics. Remember, he also came into the power by doing a very, very violent movement. We started from Bangur or Singur. Okay, for which he went right up to hunger strike for 75 days. Okay. So he is not afraid of political violence. And she has understood and mastered the art of violence. क्योंकि आदमी तो वही है, पहले कम्युनिज्म करते थे, अभी टीएमसी करता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी अगर ममता बनर्जी को जो ये पॉलिटिकल वायलेंस या वायलेंस वाला टूल उनके पास से चला जाएगा तो इलेक्टोरली इट इज पॉसिबल टू डिफीट हर. नॉट इमीडिएटली. यू कैन सी व्हाट हैपेंड टू द मेन नेशनल पार्टी ऑफ बीजेपी. Not the president election, when she was a chief minister for the second time, then BJP कितना MLC में आ गया था? Almost touching 50% or say 40%. लेकिन उन्होंने 5 साल में ऐसे खेल दिखाया, नाटक किया, टूटा नहीं, व्हीलचेयर लेके वो कैनवस कर रहे हैं. This appeals प्लस फियर साइकोसिस. तो बाबा वोट दे दे, तो वही मेन बीजेपी पार्टी का पत्ता काट गया अगले बार. शी इज द मास्टर ट्रूप. आई कैन सी दैट सर. ये एंटायर इकोनॉमी एंड सोशियोलॉजी हैज बीन रेडिकली पॉलिटाइज्ड बाय द ओनली कम्युनिटी इन इंडिया, यू कैन से बाय तृणमूल कांग्रेस. You can say it is a fight between DMK and AIDMK. जो ज्यादा आपको दे सकते हैं, कोई सोने का सोना दे रहा है, कोई टीवी दे रहा है, वो कहते दिस इज सोशल जस्टिस. पार्टी का नाम में सबको साइकिल दे रहा हूं, सबको टीवी दे रहा हूं, तो क्या गुनाह किया है? सर ये जो फ्री बाइज हैं ना, ये तो एक्चुअली आपने देखा होगा कि सभी दे रहे हैं आज की डेट में, और अब सभी दे रहे हैं तो इट कैन नॉट बी ए डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. मेरा पॉइंट ये है कि वेस्ट बंगाल इसलिए डिफरेंट है कि काफ़ी हद तक, और स्पेशली पिछले वाले इलेक्शन में तो देखा, इनफैक्ट आई एम वेरी श्योर दैट बीजेपी वाज लीडिंग इन द विधानसभा इलेक्शंस, बट अल्टीमेटली दैट वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस was the differentiating factor between BJP and TMC won on that account. और जो पोस्ट इलेक्शन वायलेंस हुई है वो उसी का एक रिफ्लेक्शन था टीएमसी की तरफ से कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो हम आपको पॉलिटिकली और फिजिकली एलिमिनेट कर देंगे. तो मुझे लगता है ये फिजिकल थ्रेट, वायलेंस का थ्रेट इज द मेजर टूल इन देयर हैंड
रादर देन के फ्री बाइज, आपने साइकिल दे दी या कुछ और दे दिया, वो तो आजकल सभी कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट ए बिग ये फैक्टर। टीएमसी का डुअल अप्रोच है। करना सुरक्षा दान करते करते वो साइकिल दे दिया, लैपटॉप दे दिया, फ्री एजुकेशन दे दिया, दैट अपील्स टू द हार्ट ऑफ द पीपल। ओके। लेकिन साथ साथ वायलेंस का थ्रेट भी रहता है। दैट्स व्हाट आई सेड, शी इज द मास्टर क्रू। She has learned how to play politics into the party favor. इसीलिए वो टीएमसी देखो, सेम पार्टी कभी त्रिपुरा में छा गए थे, असम में कुछ सीट ले लिया, हो सकता है गुजरात में भी आ जाए, who knows? एक रीजनल पार्टी का बेगर आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चल सकता। और जहां तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट का बात कर रहे हो, MPs is based on the population. If I take population vis-a-vis land, Jameen into account, the most populated state of the country is West Bengal, not even UP. Yes, Per yes. square kilometer number of people. We don't count that. If we count the people, then the number of MLCs goes up, and automatically the MPs number goes up. So the opposition gets strong. तो इसीलिए आप देखेंगे प्रेजेंट फेनोमेना में who will be against बीजेपी, अभी बीजेपी के नाम भी भूल जाते हैं। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी, who has been praised across the world, and balancing the act of war between Ukraine and Russia in such a way that every major political leader is coming to him saying that you are the best. ये जो स्टेबिलिटी लाए हैं, ये स्टेबिलिटी का साथ वेस्ट बंगाल का हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन शी कंटिन्यूज। सर एक बात बताएं, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो बेसिकली हिंदू कम्युनिटी है, और आपको पता है पूरे देश में आजकल क्या चल रहा है। अब मेजोरिटी कम्युनिटी को टेररिज्म का भी डर रहता है, और वेस्ट बंगाल एक्चुअली अगर आप देखें तो ईस्टर्न इंडिया, मतलब नॉर्थ ईस्ट का एक्चुअली वो गेट है, वहाँ से आप एंट्री करते हो पूरे जो 7 सिस्टर्स हैं वहाँ की तरफ के लिए। तो मेजोरिटी कम्युनिटी को कभी ऐसा नहीं लगता कि पूरा ये जो पोलराइजेशन है, मुस्लिम इमिग्रेशन है वेस्ट बंगाल, मतलब बांग्लादेश से रोहिंग्याज को काफ़ी हद तक उन्होंने वहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप, उस कैंप्स में रखा हुआ है, नॉट कंसंट्रेशन कैंप, कैंप्स में रखा हुआ है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो पूरा सिनेरियो है, ये पूरा एक एंटी नेशनल सिनेरियो में डेवलप होने वाला है। मेजोरिटी कम्युनिटी को ये डर लगता है। डिफिकल्ट टू से, क्योंकि वो असम गवर्नमेंट ने बारबेड वार लगा दिया। ओके। और आज ही का अखबार में है एक कमांडर ऑफ बीएसएफ जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का टेरिटरी का बीच में था, एक दैट मीन्स पोस्ट रिटायरमेंट, ही इज अंडर पुलिस कस्टडी बिकॉज 15 करोड़ तो उनसे मिला है। वो कहां से कमाए? कहते कैटल स्मगलिंग। ओके। कैटल के साथ ह्यूमन स्मगलिंग। इट इज रैम्पेंट इन वेस्ट बंगाल। और आई कैनॉट कंपेयर, though being a Bengali, I cannot compare West Bengal to the northeastern states. Reason being, West Bengal is much closer to the Arabian Sea. इसीलिए वहां पर आइलैंड भी है, सुंदरबन, plus there it is so close. Even the central government have to barter to get 3 villages by giving 3 villages to Bangladesh. So there the terrain is such which cannot be compared with the Assam also. So this subtle geological variation makes it prone for migration from Bangladesh to West Bengal and vice versa. And that is mainly due to language. That's what I said. West Bengal is unique in this country. ओके। अब आप एक बात बताएं सर, दो एक्चुअली मेरे क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है कि ऑब्वियसली ममता दीदी का जो एस्पिरेशन लेवल है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने का है, एक तो उसके बारे में मैं आपका कमेंट चाहूँगा। और दूसरा, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन शी इज, शी सो
arrogant, almost a dictator, will not listen to anybody. प्राइम मिनिस्टर आएगा तो उसको रिसीव नहीं करेगी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग होगी तो उसको अटेंड नहीं करेगी, और अगर अटेंड करेगी तो वहाँ पे कुछ नहीं बोलेगी, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेगी कि हमारे साथ तो सौतेला व्यवहार हो रहा है. यू नो, एट one platform she says कि central government is not democratic, they are not listening to us, and at the same time आप देखो वेस्ट बंगाल में आते ही same behavior she generally manifest. So what sort of a person she is, what sort of personality, and in that case how she is visualizing becoming the Prime Minister of India? If TMC is visualizing, I've got no comment. Reason being, not at least in 2024. Maybe if the opposition parties can combine or may combine, like all the three parties of the Maharashtra or AAP and so many other smaller parties, if they combine, maybe in 2029, nobody knows whether she is aspiring or whatnot. Let the opposite leader comes out. But one thing TMC has maintained along with the communism reign during post-70s, they have never produced a mass leader. Never. Right from the history, you can see even the great leader of West Bengal, Subhash Bose, ran away, and Dr. Bidhan Chandra Rai, who was a part and parcel of the constitution, left the central government and went to West Bengal because the states were created on the basis of language. So to come back to the mainstream for TMC will take a very long time. And as far as the present incumbent, the third-time Chief Minister, Mamta Banerjee, there are news afloat. Some people say she converted to Muslim religion. Some people say she is a widow. Nobody knows. But her attire has become a brand. वही हवाई चप्पल, वही सफेद साड़ी. It has become branded in the mind. So you can indirectly compare her. Yes, she is a present-day dictator of West Bengal politics, but not on the minds of the West Bengal people. That is the difference. Okay, They so are seeing a new leader like Abhishek Banerjee coming up, who has got a foreign wife. Maybe the next leader might be Abhishek Banerjee, who is nephew of Mamata Banerjee. Very good. Carry on. so thank you so much, sir. It's really a pleasure interacting with you. Thank you. So nice of you, Virendra. Bye. थैंक यू सर, बाय सर. सो मेनी पीपल आर गोइंग टू आस्क मी कि एक मिलिट्री पर्सन को पॉलिटिकल एनालिसिस करने के लिए मैंने क्यों इनवाइट किया. फैक्ट रिमेन्स, आपने पूरा डिस्कशन सुना. कर्ण भट्टाचार्य जी वेस्ट बंगाल के साथ बड़े क्लोजली एसोसिएटेड हैं. यू नो, हिज रूट्स आर इन कैलकाटा एंड ऑफ कोर्स राइट नाउ ही इज बीन मूविंग ऑल अराउंड इंडिया. सो ही हैज गॉट डीप इंटरेस्ट इन द political and social milieu, and that is why I thought I must take his opinion about West Bengal politics. I hope you liked it. He is very blunt and he is very clear because he is very knowledgeable. So thank you so much for watching. I will see you in next video. Thank you.